students, welcome to the first physics class. As you know, in higher secondary session, science is classifying three categories. First one is chemistry, second is physics, and third one is bio. In this lecture, we study first chapter of physics, motion. The several terms related to this chapter, first we discuss that motion, terms related to motion, physical quantity, distance, displacement, speed, velocity, acceleration, uniform circular motion, graphical representation for uniform and non-uniform motion, and three equation of motion which we derive in this chapter by graphical method. All these are the terms which we study in this chapter. Now, let's start with the first topic of the chapter, motion. What is motion? The change in the position of object with respect to time is known as motion. Object की position यदि time के respect में change होती जाती है तो in that case we can say that an object or body is in the state of motion. यदि कोई भी object या कोई भी body टाइम के साथ उसकी पोजीशन में चेंज शो करता है तो इन दैट केस वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट और बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन. इन डे टू डे लाइफ we can see several examples of motion like moving of vehicles on the road, flying birds, movement of needle of watch. These all changes its position with respect to time. So we can say that these all are in the state of motion. Now again we explain several terms related to motion. I hope motion is clear to all. Now several terms related to motion. Physical quantity. Physical quantity are those which can be measured. ऐसी quantity जिसको अपन measure कर सकते हैं, these quantity are called physical quantity. Physical quantity are classified in two categories, vector quantity and scalar quantity. First one is vector quantity and another is scalar quantity. What is scalar quantity? Scalar quantity are those which having only magnitude. Magnitude, it means nothing but it is the measure of length or size. ऐसी क्वांटिटी जिसका कोई मैग्नीट्यूड होगा, जिसकी कोई लेंथ होगी, जिसका कोई साइज होगा, दैट दीज क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी. सम एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी आर लेंथ, स्पीड एंड डिस्टेंस. अनदर type of physical quantity is vector quantity, which having both magnitude as well as direction. Example including that quantity are force and displacement. How can we say that the force is a vector quantity? Suppose if we push or pull something, it may be move in any specific direction, so we can say that it having direction. Thus force is an example of vector quantity. Now next term, distance. What is distance? एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी. बॉडी जो एक्चुअल लेंथ को कवर करेगी वो उसकी क्या होगी? डिस्टेंस. सपोज दैट वी आर सिटिंग एट दिस पॉइंट एंड दिस इज अवर होम. नाउ वी स्टार्ट मूविंग एंड रीचेस एट द पॉइंट एस. दिस पॉइंट रिप्रेजेंट स्कूल. सो द डिस्टेंस बिटवीन एच टू एस इज डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज मे बी 3 किलोमीटर. आई होप इट मे बी 3 किलोमीटर. माना मैंने होम से जो स्कूल की डिस्टेंस है वो कितनी है? 3 किलोमीटर. तो इस केस में डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 किलोमीटर. तो डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है बिकॉज इट हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड इज व्हाट? मेजर ऑफ साइज एंड लेंथ. As we know that mass is measured in kilogram, similarly distance may be measured in meter or SI unit of distance is meter. What is SI? Standard International. Standard International unit of distance is meter. Now let's take an example to understand distance. Consider the motion of object. अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं? कोई ऑब्जेक्ट है, वो किस में है? मोशन में है. लेट ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ओ. माना एक ऑब्जेक्ट जो उसका मोशन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? पॉइंट ओ से. एंड
रीचेस टू डी, पूरा मोशन कंप्लीट होने के बाद वो कहाँ पे पहुंच रहा है, डी पे। तो डी पे पहुंचने के लिए वो पहले ए से पास होगा, आफ्टर दैट इट पासेस थ्रू बी, इन नेक्स्ट टर्न इट touches the boundary of C, then goes to D. So when object start its motion at O and reaches at D, the total distance, how can we calculate? In that diagram we see that OA equal to 5, OB equal to 10, BC equal to 8 and CD equal to 20. On adding these four terms we get 43. So total distance covered by object from point O to reach the point D is 43 meter. One more thing is that distance is always positive और ज़ीरो। कैसे? यदि अपन यहाँ से स्टार्ट हुए और यहाँ तक गए, मीन्स कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस अपन ने ट्रेवल करी है या कुछ ना कुछ तो पोजीशन चेंज हुई है टाइम के साथ, तो हमेशा डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब आंसर क्या आएगा अपना, प्लस में। वन मोर थिंग, distance may be zero. How it is possible? Suppose that we stay at home and never go to school because that day is having holiday. So we stay at home and remain at home itself. In that case, the distance remain zero. Okay. So distance may be positive or zero, but never negative. Clear? Now next term is displacement. What is displacement? The shortest distance between initial and final point. किसी initial और final point का जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसी को आप क्या बोलोगे, displacement. Suppose that these point represent your home, these point represent your home and these point represent your school. अब दो रास्ते, घर स्कूल से घर जाने की या घर से स्कूल जाने की। एक रास्ता तो है ये जहाँ पे अपन पहुँच गए घर से स्कूल, और दूसरा रास्ता है अपना ये जहाँ पे अपन पहुँच गए घर से स्कूल। नाउ व्हाट हैपन इन दैट केस, हियर H to S, this path as we over underline that path, this path is short and this path is long. So the actual distance between initial and final point, ये initial point हो गया जहाँ से अपन ने start करा था, और ये final point हो गया जहाँ अपने को पहुँचना है। तो इन दोनों के रास्ते के बीच में जो shortest distance है, जो सबसे छोटी distance जितनी ट्रैवल करनी पड़ेगी, इन दो ऑप्शन में से अपन ने ये ऑप्शन चूज करा, तो इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन ट्रैवल कर रहे हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट. Displacement is always vector quantity because it having magnitude as well as direction. SI unit of distance and displacement both are same, that is meter. Now let's another example to clear what is difference between distance and displacement. Suppose that body start from point O, reaches final point B after passing through A. बॉडी O से स्टार्ट हो रही है, फाइनल डेस्टिनेशन उसका B है, और वो A से गुजरती हुई B पे पहुंच रही है. इन इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा उसमें O, और फाइनल पॉइंट क्या हो गया उसका B. ओके, सो इन दैट केस शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो जाएगा, इस डायग्राम में अपन देख के बता सकते हैं. शॉर्टेस्ट पाथ इज OB, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी OB. और इसी वाले डायग्राम में यदि मैं डिस्टेंस बोलूंगी तो क्या होगा OA प्लस AB, मीन्स OA यदि 3 है, AB यदि 4 है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 7, और डिस्प्लेसमेंट क्या है OB. अब OB को कैसे कैलकुलेट करोगे, एज यू नो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हियर हाइपोटेनियस ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हाइपोटेनियस कौन हो जाएगी OB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर. पुटिंग द वैल्यू OA का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16. ऑन एडिंग दिस टू टर्म 25, स्क्वायर जब हटेगा सामने का लग जाएगा रूट, तो स्क्वायर रूट 25 का कितना मिलेगा 5, तो 5 मीटर. अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस एग्जाम्पल में वो कितनी हो गई 5 मीटर. बट इन केस ऑफ डिस्टेंस के केस में OA प्लस AB, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 7 मीटर. वन मोर थिंग हियर, नोट दैट डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, जैसा अपन ने एग्जाम्पल में देखा.
नेगेटिव भी हो सकता है कि ये आंसर आपका शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो नेगेटिव आ जाए, और हो सकता है ये आंसर आपका क्या हो जाए, जीरो। कैसे होगा, जितना अपन इनिशियल पॉइंट से गए उतना ही वापस आ गए, तो उस केस में आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।